I apologize. Okay, let's start. Any questions from yesterday? First of all, anyone? No, it's good. Okay, cool. Where did we stop yesterday? Escape characters, string methods. हो गया था, methods discussion. Okay. Yeah. Okay. Everyone ready? Cool. So the first thing we'll discuss today is how do we format a string? Okay. What do we mean by format? So देखिए अभी तक whatever print statements or string statements we were using, they were all static strings. What do we mean by static strings? Hello world. No matter how many times I print it, it is not dependent on any variable, any timestamp. It's not dependent on any condition. It's a static string. At every time it will print this. Okay. But what if I want to say hello from, and then I want to add the name of the user here. Let's say I am the user and there is some string value here. Let's say Pranjal. How will I incorporate Pranjal to be added here? And not the string Pranjal, but largely the variable user. So the user can eventually be someone else. Let's say it can be Ishita, right? Or it can be people I can see online, Suramita, right? So it can be any name, right? I want to make sure that name gets here. Okay, not a static string, but a dynamic string. This is where we use the string operators, the string data types method called dot format. What does dot format do? Dot format fills these gaps that you have made with curly brackets. Okay, these curly brackets let dot format method know where which variable is going to come. Okay, so suppose this is my user ka name. Hello from dot format. यहाँ पे मैं लिखता हूँ user. So it will come hello from name. Now this value can change. Right? This value can be anything. Right? Does that make sense? Everyone? Yes or no? Yeah, yes. Clear? Okay. Now, what if there are multiple variables? Hello X from Y. Suppose client has a name and user has a name. Now what? Let's say Protim is the client. Okay, so I want to print hello client from user. So dot format client comma user. The dot format method will automatically understand that there are two places to fill and there are two variables that I have. So it will automatically unpack them in such a way that client goes here, user goes here. Is that clear, everyone? Yes, no? Simple logic. Zyada kuch confusing nahi hai, I hope. If there are any doubts, let me know. So if there are three, then 3 or 4. ये तो अब infinite है ना, comma के बाद डालते जाए. Right? Position also doesn't matter, right? See, position right now matters because how does it know that client is going to go to this place or this place? By looking at the index of how you are passing the parameters and the index of your empty spaces. Okay. Right? Got it. Let's say यहाँ आप user लिख देते हो, यहाँ आप client लिख देते हो. Something like this. Then client is equal to client, user is equal to user. Then it will be the way you are expecting. See, user is Vaibhav. Even if you passed client earlier, but user has come in the place, right? That is because यहाँ पे आपने variable specify कर दिया और यहाँ पे आपने variable का value define कर दिया. Okay, so this can be anything. This can be U, this can be C. C
C is equal to client and U is equal to user. अभी थोड़ा ज्यादा क्लियर हुआ होगा, पहले वो यूजर क्लाइंट कंफ्यूजन होगा, बट ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, बिकॉज नाउ पोजिशन डज नॉट मैटर. I can put them in any place because I have defined the name, the value of the variable in the respective location. So format method knows that यहाँ पे C आएगा and उसको पता है C का value क्या है, client है, तो it will automatically fill client in this place and user in this place. अगर आपने यहाँ दे दिया C, यहाँ पे U दे दिया, तो भी वो fill करेगा, right? Any more confusion? Sir, which is the preferable way of writing the code? Always this. So remember, like Python का वो Zen मैंने आपको दिखाया था ना, Zen of Python, explicit is better than implicit, always. यहाँ पे जब आप direct value दे रहे हो, तो your assumption is कि Python will understand the index orientation and map the values. ये explicit है, इसमें गलती होने का कोई chance ही नहीं. Okay. My point. This is explicit. Yeah. Explicit means you are stating what you want. Okay. An example of implicit will be something like implicit statement kya hai? Ki can you analyze the data? This is a very frequent industry problem that I see. A lot of people that I work with, they come to me with problems stating ki Pranjal, we are working in this domain and this company, and our boss is told ki just analyze this data, right? So analysis is an entire universe in itself. Whoever has done any kind of analysis at any point of time in their life, they know that analysis is like a, ocean with infinite depth. You can do all the analysis you want. You can get more data. You can do pivot table, group by 10 other things, right? But let's say I want to do something like user cost benefit ratio analysis. This is an explicit statement because this knows कि पर यूजर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, पर यूजर से बेनिफिट कितना आ रहा है, उसका जो रेशियो है दैट शुड बी लेस देन 1. कॉस्ट शुड बी स्मॉलर देन द बेनिफिट दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम अ यूजर, राइट? तो दिस इज एक्सप्लिसिट. तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में ऑलवेज चूज एक्सप्लिसिट. ओके, गॉट इट. नाउ in the dot format there is a slight variation that gets added. That variation is, suppose there is a value of a float f1 is equal to 10 point and there is a lot of decimal after this. Okay, there is a lot of decimal after this. So the first thing you should notice is that Python automatically restricts after a certain point of time. Okay, it does not mean that if you add that many decimals you will get that many decimals. Python has a limitation. If you want to count the limitation, I will just put this into a string and try to find the length of this. Kitna length hai? 15. Okay, that means 16 bits record होते हैं. 16 bits, right? 15 is because decimal point के पहले वाला भी record होता है, but after the decimal 15 means total 16 bit का storage है for a floating point. Okay, in that particular situation Python has limited कि आप इतना ही दे सकते हो, but obviously in lot of cases you do not want the entire decimal. You do not want that amount of precision to be shown on the screen. Does everyone understand this? Yes or no? 100 divided by 3 जब हम करते हैं तो वैल्यू बहुत लंबी है, right? Because वो infinitely divide होगा. But we are good with 33.3%, right? For that particular reason, in the dot format, there is a orientation which defines what format do you want. Okay, if you do percentage D, okay, and if you do percentage S, second percentage D, oh, it does not work with dot format. 1 second. Okay, so I have defined two variables, let's say 30 point something something, and super total, let's say, or like just assume that this is the business generated by a subsidiary and this is the business generated by the parent company. Okay, so I want to compare the percentage revenue of the subsidiary
with respect to the total parent company value, right? 120 point something. Suppose I have this, right? Now I don't need, so this is a small changes. अभी आप देखो percentage D जहां पे मैंने add किया, right? Percentage D total was the value 30.234354, but percentage D has actually formatted it to be an integer. Okay, percentage D has formatted it to be an integer. Percentage S represents floating point value, right? So there it has incorporated all the values. Okay, this is another way of printing the data. Now you would say, Pranjal, why are we using two different kinds of formatting of data, right? Does anyone have that question? Agar nahi hai to you guys are not curious enough. Okay, you should be curious ki, Pranjal, why are there are two ways to do the same thing? Why can't we do everything in one, right? Anyone has that question? Yes, no? Okay, Vaibhav has it. Thank you. Cool. I would have anyway given you the answer. Okay. So the total value is out of super total this dot format. यहाँ पे डालेंगे total, यहाँ पे डालेंगे super total. Now, if I want to format this, okay, if I want to format this, here I can actually write a formatting string. ठीक है, I will show you the meaning of this. पहले तो आप लोग सब खुद से देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे. Just observe what is happening and tell me कि how is formatting going on. Is it like 2 floor to 3 floor? Yes, that's correct. Any other observation? This is taking up to 2 decimal places, and this is taking up to 3 decimal places. Yeah. And Anything else? It's rounding off to the nearest one. I think 4, 6 after 5 has become 6. Exactly, that's correct. so how many digits after the decimal? That is what we are defining, 0.2f and 0.3f. That's correct. That is correct. Right? So if you see this, the first one, that indicates कि आप decimal point के पहले पूरा ले लीजिए. Okay? Remember slicing में कैसे होता है? यहाँ पे start होता है, यहाँ पे ये होता है, then यहाँ पे end होता है. तो इसी में if you do not pass anything towards the left, if you do not pass anything towards the left, end side में आपने format दिया 0.2f. So two floating points after the decimal. Right? That's what it's doing. And additionally, it is rounding off the numbers. Okay. Additionally, it is rounding off the numbers. Okay. Now, suppose you want to be an here to be an integer, right? So you can just totally ignore this, and you can convert the total into an integer here as well. ठीक है? ये भी possibility है. ठीक है? So multiple ways of doing the same thing. Okay. Any questions? Anyone? From the topic that we just discussed? Anyone has any questions? No. Good. Okay. Now, we understood yesterday that every data type has a lot of methods. And we saw online that there were different methods for a string, right? We saw dot capitalize, right? And there are other ones like swap case, center, count, ends with. An example of a few of them are given. So there are a lot of string methods, but we've added a few here just so that you can look at them. I'll discuss 3 or 4 very major ones. Okay. So the first major one that I want to discuss with all of you is dot find. Okay. Now, text is hello, welcome to data science. Data science is best subject. Okay. Some biased opinion. So text dot find welcome, right? And it gives me the answer 6. What is this value 6? Can anyone tell me? What is the value 6? Index from where the string is starting. It's a position.
Great. Index, don't call it position. Position की बात ही Index. हटा दीजिए. Python में कुछ position नहीं, ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is the starting position of welcome. Clear है सबको? So dot Yes. find gives you a starting position of welcome. अब मान लो मैं एक गलत वैल्यू देता हूं, that does not exist in the string. Then what does it give me? -1. Okay. So this is very, very important when you are going to build conditions based on existence of a keyword in a string. Clear है सबको? Right? If keyword, right? If keyword, not like that, that's string s1 dot find keyword is not equal to -1, then क्या होगा? We will print keyword found. ठीक है? Else print keyword not found. ठीक है? First of all, don't worry about the if, else, and these things that I have just shown you. Are you understanding the logic of how I can use dot find based on the number it gives to be able to extract or know if a keyword exists or not? ये वाला सबको clear है कि नहीं? The logic. No sir. Sir, -1 कैसे आया? -1 इसलिए आया क्योंकि ये exist नहीं करता है. So -1 represents inexistence. Okay, okay. Okay. And अगर एक positive letter आएगा, positive number आएगा, that means it exists at that particular location. Okay. Okay, sir. Okay, so by default, Pranjal, it is representing like non-existence and it's not anywhere related to backward slicing, right? No. Backward index यहाँ पे नहीं देता है. Always forward index. See, backward index का perspective क्या है? Backward index हम तब use करते हैं जब हमारा objective backward जाना है. यहाँ हम सिर्फ search कर रहे हैं, right? Whenever you are doing a search, if you get the index, forward, backward, कोई फर्क नहीं पड़ता. You need the index, right? तो आपको index दे दे रहा है वो. अब आप forward से access कर लो. So that there is consistency throughout the Python library. That is why they have not provided backward or forward. It's always forward. Okay. Right. Any other questions? मेरा क्वेश्चन है कि ये हमेशा का -1 ही देगा? Yes. In existence में always -1. Because positive होते ही तो ये आ जाएगा ना, 0th index. -1. Yes, go ahead. अगर मैं ये अगर पूछती कि WEZLCOME then मैं Z W के बाद -1. Always -1. Exist नहीं करता ना string में, तो default -1. Okay. Got it. Whatever does not exist in your string will give you -1. So इसका output किस range में आएगा? -1 to infinity. जो भी string का size हो, right? -1 to string size. -1 represents inexistence. Starting from 0 to the string size, this represents existence. Okay. अभी clear है सबको? Yeah. Coming to dot join. अब dot join क्या करता है? It takes a list. Okay. List is another data type in Python that can store multiple individual data types. जैसे string is a data type. Okay. String is a data type. Multiple strings separated by commas with square brackets enclosed. This is a list of strings. Okay. This is a list of strings. ठीक है. List के बारे में we'll do a much more in-depth understanding. For now, just understand that there is another data type which can hold multiple values at the same time, separated by commas, and this is that. This is a list of strings. Okay. There is a dot join method that will take a separator and your list and will join your entire list one by one with a separator in between. जैसे मैं एक example देता हूँ. This is my list. This is my list of words. Okay, list of words.
If I want to convert it into a sentence, डेटा और साइंस के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, साइंस और इज के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, इज और माई के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, माई और फेवरेट के बीच में एक स्पेस होना चाहिए, फेवरेट और सब्जेक्ट के बीच में एक स्पेस होना चाहिए. So what do I want to do? I want to concatenate or join the list. I want to concatenate and join the list of words with a space in between. तो space जो हम use कर रहे हैं ना, that becomes my separator. That is what is going to separate the two words in the list. And ये separator, because it is a string, इसके ऊपर dot join method लग सकता है. The join method will take list of words within itself, and then, sorry, I'll have to comment this out. And then it is going to join the individual words in my list. Take your time, take a minute, look at this dot join list of words, and let me know if it does not make sense to you. I'll re-explain. Sir, what is the meaning of the inverted comma, starting from inverted comma? Space ना, string में आपको ये gap चाहिए ना. Basically आप क्या कर रहे हो, data plus space plus science plus space plus is plus my. Are you understanding my point? Yes, It sir, is yes, sir. joining all the words with this space With in the the space, with the space. Yes, sir. okay. Okay, sir. सबको clear हुआ? Anyone has any doubts, guys? This is the time. Do not delay the question. It will never be answered. Sir, concat itself is a function. Concat, no, concat is not a function. Okay. Right. अभी ये लोग कभी किसी दिन निकाल दे तो I don't know. As of now, based on my knowledge, concatenation Python के core में function नहीं है. Okay, check कर लेते हैं. Okay. अगर change हो जाएगा concat. तो पाइथन में concat join से होता है. स्ट्रिंग में तो जॉइन और कॉन्कैट सेम ही है, राइट? देखो कॉन्कैटिनेशन का दो एस्पेक्ट क्या है, या तो आप हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेशन करोगे ऐसा, या वर्टिकल, आई मीन वो वाला वर्टिकल हो गया ऊपर वाला, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, राइट? तो कॉन्कैटिनेशन का दो मतलब तब होता है जब आप ये दो पॉसिबिलिटीज हो, बट स्ट्रिंग में तो आप ये, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है ना स्ट्रिंग में. दैट इज वाई उसको जॉइन बोल देते हैं, कॉन्कैट नहीं बोलते हैं लॉजिकली. ठीक है, फॉर Okay. एग्जाम्पल आपके पास दो डेटा फ्रेम्स हैं, ठीक है, आपके पास दो डेटा फ्रेम्स हैं, मतलब दो फाइल्स हैं, df1 df2. तो आप क्या कर सकते हो, df1 df2 कर सकते हो, या फिर df1 df2 ऐसे अटैच कर सकते हो. तो ये दो ऑप्शन है आपके पास टू कंबाइन योर डेटा फ्रेम्स, which is why it is called concatenation. When we learn pandas, we'll see that there is a pd.concat जिसके अंदर हम लोग ये दोनों ऑप्शंस देख सकते हैं. And what if I want to concat words as well as some operation in between, like the product of 2 into 3 is 6. Product of 2 into 3 is 6. You हाँ, want to do 2, then you want to do multiply 3 like this. नहीं मतलब 2 into 3 has to be a numerical operator. String नहीं है वो. Okay. Like sir, for a loop, जैसे हम loop में लिखते हैं 2 into, I do some iterations and I want to again print the product of 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 2. उसके लिए तो Sorry, 2 डॉट into 2 is फॉर्मेट है 4. ना, आप तो लूप की बात कर रहे हो, राइट? फॉर I in range 1 to 10 print 2 into this is equal to this dot format. यहाँ पे आ जाएगा आपका I, यहाँ आ जाएगा 2 into I, and this will do whatever you want. इसको 11 कर दो तो पूरा टेबल आ जाएगा. नहीं, मुझे इसमें string भी चाहिए, the product of ऐसे आगे. अरे the product of 2 and Okay, got it. एक ही बात है ना, मैं तो स्ट्रिंग में फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ. हाउ विल इट चेंज एनीथिंग? मैं कुछ भी लिखूं स्ट्रिंग में,
join is like only for string. Yes, join is only for string because integer में join का क्या logic है? हाँ. ठीक है, I mean always assume, एक मतलब Mhm. has been my learning, whenever I am मतलब thinking about a question, you think कि अगर practically या logically वो question का requirement है, then वो definitely होगा code में. क्योंकि I mean we are learning it now. There's someone who's built it like 10 years, 15 years before, right? And so many people have been working on the library. तो किसी को तो वो loophole दिखा होगा कि यार ये तो होना चाहिए, ये क्यों नहीं है, right? Like I met the inventor of Python, right? He's a Dutch programmer. Yeah. So he is like, मतलब Python को इतना लोग कॉम्प्लिकेट करके बोलते हैं, इट्स द सिंपलेस्ट लैंग्वेज. तो उसने 5-6 से एग्जांपल्स दिए, राइट? कि कैन यू आंसर दिस, देन पाइथन कांट आंसर दिस, यू कैन आंसर दिस, पाइथन कैन आंसर दिस, ऐसे करके उसने समझाया था कि whenever you are confused कि something exists or does not exist, always do a logic check. Does it make sense or not? If it makes sense, it is available in Python. Even if you don't get it, someone else might have implemented it in some library of Python, so you will be able to get it. Yeah. Okay. Any other questions? Anyone? No. Okay. Cool. Moving to the next method, बहुत simple है, dot replace. What does dot replace do? It takes one keyword existing in the string and it replaces it with another keyword. So earlier the text was I like R. I replaced the R with Python, and now you get X is equal to I like Python. Very simple. Okay. अब आपका सवाल होगा, प्रांजल, if there are two R's, will it convert both of them? Yes. Okay. It does a all existing strings replacement. All existing strings replacement होती है. ठीक है. Sorry, and For example, RRR, Python. Yeah, someone had a question. Go ahead, Pranavi. yeah, and if I want a selected R to be replaced, Selected R to be replaced ना, तो उसका logic I think यहाँ पे एक variable होगा. Let me check. Count is equal to 1. Takes no keyword arguments. क्या हो गया? Old new. Okay. Old is equal to new is equal to second text dot replace maximum number of occurrences to replace means replace all occurrences. तो सही तो है. Old new count, this is what I should be doing and I am doing. Okay, count variable keyword नहीं डाल सकते, so 1. अभी ठीक है? Yep. 2 करना है तो 2 कर दीजिए, 3 करना है तो 3 कर दीजिए. -1 all. हाँ, -1 तो पीछे से last All. one. ठीक है. अगर last R करना है तो लास्ट आर नहीं होगा, वैसे नहीं होता है, क्योंकि वो सर्च तो स्टार्टिंग से कर रहा है ना. अच्छा. इट इज सर्चिंग फ्रॉम द स्टार्ट. अब देखो, मैं आपको उसका लॉजिक बता सकता हूँ. अगर जस्ट आपको हैक जानना है ना, मैं बता देता हूँ. सपोज ये है आपका टेक्स्ट, ठीक है. आप करोगे रिवर्स्ड, एक फंक्शन होता है, उसमें आप टेक्स्ट डालो, ठीक है. उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का ट्राई करो. What happened? Reversed text dot str dot replace. ट्राई कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है. मतलब it's not for sure. There's no attribute str. Okay. Oh wait. -1 से इसको उल्टा करते हैं. डॉट रिप्लेस, यहाँ पे 1, फिर इसको वापस उल्टा कर देते हैं. ये गड़बड़ हो गया. ओके. हैशटैग
ठीक है, हो सकता है अगर आप चाहो तो, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, राइट। आपको टेक्स्ट को रिवर्स करना पड़ेगा, देन रिप्लेस करके उसके अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू फिट करना होगा, दैट यू विल हैव टू टेक अ स्पेशल कैरेक्टर देयर। वो Okay. स्पेशल कैरेक्टर को देना आप अगले चांस में रिप्लेस करोगे, बिकॉज यहाँ पे आपने 1 लिया है तो वो लास्ट वाले वैल्यू को रिप्लेस करेगा, एंड देन आप वो स्पेशल कैरेक्टर को पाइथन से रिप्लेस करोगे। तो पॉसिबल है बट थोड़ा ट्रिकी है। Okay. So, and one last question: what is the meaning of the double colon? सो दिस डबल कोलोन डज रिवर्स, ओके -1। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। सो एक चीज हम लोग कवर करने वाले थे बाद में, आई विल कवर राइट नाउ। Pranjal has a meeting today for which he is not prepared. Okay, suppose S1, तो इसका एक तरीका एक्सेस करने का है 3 to 10, राइट। लेट्स से 0 to 10 करते हैं। ओके, आई वांट टू ऐड दिस, या लेट्स से मीटिंग टुडे एक्सेस करते हैं, तो यू विल गेट लेट्स से 15 to 30, 14, 27। ठीक है, मैं रैंडमली किया जस्ट टू गेट दिस। अब देखो, इफ आई एक्सेस ऑल द स्ट्रिंग आफ्टर द 14th वैल्यू, लेट्स से मीटिंग टुडे के बाद, I can actually also have something called as, let's say, a step size. What does step size do? The step size in the slicer skips a value and does not do consistent traveling. जैसे अगर आप देखो यहाँ पे m के बाद उसने एक e को skip किया, then दूसरा e आया, then उसने t को skip किया, then I आया, right? Then उसने n को skip किया and g आया. So what it did is it took 2 steps at a time rather than 1 by 1 step. It took 2 steps at a time. तो ये जो -1 है ना, this -1 represents reverse with the step size. Okay, तो largely आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा. Step size of string indexing is not a very practical use case, so not very useful. But always remember, if you want to reverse a string, you can always do double colon -1, and it works because of the step size integration in the slice. So it will just reverse your string. Okay. बताइए, any questions? Any other questions, guys? Yes, no? सर मेरा Yeah. एक क्वेश्चन, बोलिए सर मैं ये समझ गया कि डॉट रिप्लेस के समय अगर हम स्ट्रिंग में जो वर्ड है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे आपने डबल कोटेशन में आर रखा है, तो अगर मैं उस जगह लाइक रखता हूँ, लाइक भी चेंज हो जाता है ना? Okay. हाँ, what's the question? मतलब अगर आर की जगह मतलब दूसरे कोई और वर्ड रखते तो वो भी रिप्लेस होगा ना? R के जगह कोई और वर्ड होगा, हाँ, मतलब it will find the word that you want to replace with the word that you want to replace with. और वो स्ट्रिंग में होना है। तो रिप्लेस तो स्ट्रिंग के लिए ही वैलिड है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ओके। ठीक है, अगेन लॉजिक एकदम, मतलब ऐसा कुछ हाई फंडा नहीं है कि मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कुछ है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर स्ट्रिंग ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। So another basic doubt. So suppose in the string there is another word starting with capital R. हाँ, वो कैपिटल आर भी रिप्लेस हो जाएगा। हाँ, okay. So is there a way to not do it or? नो, डॉट रिप्लेस में ऐसा वे नहीं है। देन आपको अगेन रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज करना पड़ेगा। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या करेंगे ना, इट यू कैन एक्चुअली गिव आर एंड देन यू कैन गिव साइज। तो आर से स्टार्ट होने वाले वो वर्ड जिनका टोटल साइज आफ्टर आर 5 और कैरेक्टर्स है, उनको ही रिप्लेस करेंगे, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशंस का पार्ट है। पॉसिबल, बट डॉट रिप्लेस से पॉसिबल नहीं है। Okay, thank you. ठीक है, कमिंग टू डॉट स्प्लिट। डॉट स्प्लिट क्या करता है, इट डज द रिवर्स ऑफ डॉट ज्वाइन। इट डज द रिवर्स ऑफ डॉट ज्वाइन, मतलब ज्वाइन में यू आर टेकिंग अ सेपरेटर, replace is case sensitive. Yes, Python is case sensitive, Riddhi.
ओवरऑल पाइथन इज केस सेंसिटिव. ओके, सेंसिटिविटी है ही. सो रिवर्स ऑफ अ जॉइन है डॉट स्प्लिट. सो जॉइन क्या करता है, इट टेक्स अ सेपरेटर एंड देन जॉइन्स द लिस्ट. ठीक है, डॉट स्प्लिट क्या करता है, टेक्स अ सेपरेटर and splits the string to a list of words. Okay, एग्जाम्पल देता हूं. सपोज आपने देखा होगा बहुत जगह डेटा में +91, राइट, एंड देन एक नंबर दिया हुआ रहता है, समथिंग लाइक दिस. ओके, +91 ऐसा नंबर दिया हुआ है. इफ यू वांट टू रिमूव द कंट्री कोड, हाउ विल यू डू दैट, टेल मी. लेट्स अज्यूम कि आपको डॉट स्प्लिट के बारे में नहीं पता. करंट आपका जो स्ट्रिंग का नॉलेज है, आप बताइए कि हाउ विल यू गेट दिस. बिकॉज रिमेंबर, ये +91 यहाँ पे 2 डिजिट्स का है, +91 यहाँ पे 2 डिजिट्स का है, बट इट कैन ऑल्सो बी ऑफ 3 डिजिट्स और 1 डिजिट. ऐसा नहीं कि हमेशा 2 डिजिट्स का ही होता है. थिंक अबाउट इट. यू ऑलरेडी हैव वन वे ऑफ डूइंग इट. आई वांट टू सी इफ यू गाइस कैन ट्रैक इट डाउन ऑन दैट. Anything after the hyphen? So we index it. Anything before the hyphen. How do you index? Index function method. कब देख लिया आपने इंडेक्स मेथड? Have we discussed the index method yet? No. Okay. ठीक है, इंडेक्स भी मान लेता हूं. Did we do find, guys? Find किया ना अभी सबने? Yes. We discussed in class. S1 में find नहीं है. मोबाइल नंबर 1 m1 डॉट फाइंड. थर्ड इंडेक्स पे आ गया. अब देखिए, अगर मेरे को ये एक्सेस करना है तो मेरे को क्या करना है, m1 मेरे को यहाँ पे 4th इंडेक्स से चालू करना है, and I want to go till the end. Okay, so if I do not have a defined value for the end index, which means I want to go to the end of the string. Okay, I have no constraints. I want to go till the end of the string. Then I will not put any value in the end index side. यहाँ पे मैं कोई value नहीं डालूंगा. Simply close the bracket and I will get the number. Make sense, guys? Everyone, yes, no? Yes. Yeah, yes. Right? So fine. Okay, index से भी होता. I am not denying that. But index हमने पढ़ा नहीं था, तो I was not expecting कि कोई वो करेगा. अब second चीज यहाँ पे क्या आती है कि ये जो find है ना, यहाँ पे आप जो 4 लिख रहे हो वो गलत लिख रहे हो. क्यों 4 गलत लिख रहे हो? Because this 4 is valid for this mobile number, not valid for all of them. अगर ये मोबाइल नंबर चेंज होगा तो it will not be valid. So हम क्या करेंगे? We will replace this here. We'll do a +1 here. Now this is generalized for all cases. कोई भी नंबर हो, कोई भी कंट्री कोड हो, it will work. Does that make sense, guys? Yes, no? Yeah, yes. Clear एकदम? हाँ. Any questions? Anyone? तो +1 क्यों किया? +1 इसलिए किया क्योंकि थर्ड फाइंड स्लैश का है ना, I mean हाँ, डैश का है, तो Okay. हमें तो यहाँ से चालू करना है, so it's +1. उसका next, right? Okay. Now, तो ये वाला एग्जाम्पल दिखाने का मतलब क्या था कि अब ये जो डैश है ना, मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूं, बट देयर इज अनदर वे. I can do m1 dot split. I am splitting the string on the basis of a dash. ठीक है, and then I will access the last element of this list. Get the value. Okay. So again, the dot split method returns a list. जिस तरीके से dot join was taking a list and then joining and converting to string, similarly dot split on the reverse side
takes a string, splits it on the basis of a separator and returns a list of words, जो कि आप यहां देख पा रहे हो, right? Abhi, do not worry about what is a list, how do we work with it, just understand a list is a combination of different elements. How do I access the last element? Using the index -1. Does this make sense? Yes or no? सर ये लास्ट वाला और एक बार बताइए, ये वाला मुझे नहीं समझ आया। This is the dot split. ये Yeah. हमारा मोबाइल नंबर था. डॉट स्प्लिट मतलब ये डैश के बेसिस पे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा, तो ये वाला पार्ट अलग चला जाएगा, ये वाला पार्ट अलग चला जाएगा, तो ये हाँ, एक हाँ. पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, जो आपको यहाँ दिख रहा है, राइट? अब मेरे को क्या करना था, नंबर एक्सेस करना था, राइट? द एक्चुअल नंबर एक्सेस करना था. हाँ, हाँ. इस लिस्ट का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एलिमेंट है, एंटिटी है, ये कौन से पोजीशन पे है, कौन से इंडेक्स पे है? 1 भी है और रिवर्स साइड से -1 है. 1 भी है क्योंकि ये 0 एंड देन 1, बट अगर मैं उल्टे साइड से देखता हूँ, विच इज मोर बेनिफिशियल, -1. क्योंकि ये -1 पे हमेशा रहेगा. अच्छा, ओके. ठीक है, एक टास्क करते हैं गाइस, इस वाले चीज की क्लैरिटी के लिए. लेट्स डू अ क्विक टास्क. आई एम गिविंग यू गाइस एन ईमेल. ओके, सपोज abc@gmail.com. this is an email. I want you to write the code to fetch the domain name from the email. Domain name क्या होता है? Gmail. Okay, Gmail is a domain, Yahoo is a domain, right? So I basically email services provider. ठीक है, तो सपोज आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट आया जिसमें सब लोगों का ईमेल्स है, एंड यू वांट टू एनालाइज कि आपका कौन सा क्लाइंट कौन सा ईमेल्स यूज करता है. ठीक है, एन एग्जांपल ऑफ दिस विल बी द मार्केटिंग डोमेन. ठीक है, मार्केटिंग में क्या होता है, आप अलग अलग ईमेल्स में जब ईमेल सर्विसेज के साथ जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो कि आई हैव लाइक 100,000 ईमेल्स दैट आई कैन सेंड टू यू एनुअली, उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो लोग कुछ प्राइस चार्ज करेंगे. अब एक बात बताइए, अगर आपके मैक्सिमम कस्टमर्स का जीमेल अकाउंट है, देन आप याहू एंड बाकी अलग सर्विसेज के साथ नहीं जाना चाहेंगे, राइट? वाई? बिकॉज जब मेरे मैक्सिमम कस्टमर्स जीमेल पे ही हैं, तो आई विल बाई अ लार्जर ईमेल मार्केटिंग कॉर्पस फ्रॉम गूगल एट अ चीपर कॉस्ट, राइट? बल्क में लूंगा मैं ईमेल्स, तो मेरे को सस्ता पड़ेगा. सिंपल आइडिया. आई मीन, what is applicable in business in usual life, that's the same applicable in this, right? तो अभी आपको डोमेन निकालना है. ठीक है, बेसिकली fetch the email service provider. Okay, let's do this everyone. Email लिखिए and write the code for fetching it. You have 5 minutes. जस्ट जीमेल निकालना है, gmail.com. Gmail निकालना है.
अभिषेक जीमेल निकालना है, gmail.com नहीं निकालना है, ठीक है? सिर्फ जीमेल चाहिए मेरे को। ठीक ठीक ठीक। घर में झगड़ा हो रहा है, अभिषेक म्यूट कर लो यार। असीम और सिंप्लीफाई हो सकता है, और सिंप्लीफाई हो सकता है। आप एट द रेट के बाद +1 कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो कि वो जीमेल तक ही होगा, राइट? या .com वाली वैल्यू है, बट रिमेंबर .co.in भी होता है, ओके? .co.in भी होता है, .in भी होता है। ईमेल का डोमेन्स अलग अलग हो सकता है। इंद्रानी सोल्यूशन इज करेक्ट। अभिनव, आपका सोल्यूशन करेक्ट है, बस आपको वो y को वापस यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। रिमेंबर, मल्टीपल मेथड्स इन द सेम लाइन यूज होती है। डॉट रिप्लेस, डॉट अपर, डॉट लोअर सब साथ में चलता है ना, वैसे करो, सिंप्लीफाई करो। ठीक है गाइस, सोल्यूशन देखते हैं। ईमेल, राइट? ईमेल में पहले किस पे स्प्लिट करेंगे? व्हाट डू यू वांट टू स्प्लिट ऑन फर्स्ट? At the rate. करते हैं, डॉट पे भी कर सकते हैं, किसी ने अगर डॉट पे किया है तो नो प्रॉब्लम। एट द रेट पे फिल्टर करने पे आपको ABC और @gmail.com का वो मिला, सेकंड पार्ट। इससे -1 लिया, मिल गया gmail.com। इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पार्ट? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, No, it's clear. राइट? अभी देखो, ये भी तो एक स्ट्रिंग है, राइट? ईमेल क्या था? ईमेल वाज अ स्ट्रिंग, ईमेल वाज अ स्ट्रिंग, राइट? एंड दिस इज आल्सो अ स्ट्रिंग, so I can again apply dot split on this. This time I will split on the basis of a dot. I will get Gmail and com. This time I will take 0. Clear है सबको? Yes, no? सर मैंने अभी जो सेंड किया उससे वो सिंटेक्स एरर आ रहा है। जैसे मतलब मैं किया था कि aim.split@−1, तो उससे सिंटेक्स एरर आ रहा है। कहाँ मतलब पे? gmail. एक सेकेंड, आपने कहाँ भेजा मेरे को? चैट में से, चैट में। I mean, बहुत लोगों ने चैट भेजा ना, तो एक बार वापस भेजो। रिद्धि, str करने का जरूरत नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू एन स्ट्रिंग इन रिटर्न, ओके? Okay, sir. ओके, m1.split@−1, ये तो सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। आपका m1 चेक करो, m1 चेंज हो गया होगा। चेक योर m1। हाँ सर, उसमें गैप आ गया वो। हाँ हाँ हाँ, देख लिया। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्प्लिट, ऐसा कैसे हो रहा है भाई? सर आपने स्पिल्ट लिखा था शायद। ओह, मैंने स्प्लिट नहीं लिखा था, अंबर ने स्प्लिट लिखा सॉरी था। सॉरी हाँ सर, सॉरी हाँ मतलब सॉरी सर। ठीक है, चलता है ये सब भाई। ओके, तो ये भी हो गया। एक्सट्रैक्शन वाला मैंने आपको बता दिया है, स्टार्ट, एंड और स्टेप साइज, ठीक है? स्टार्ट, एंड एंड स्टेप साइज। एक्सक्लूड्स द एंड भी आपको पता है ऑलरेडी। डॉट अपर, डॉट टाइटल, कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग, सिंपली एडिशन, प्लस साइन मींस कॉन्कैटिनेशन।
तो ये भी सबको क्लियर है। अब आ जाते हैं पाइथन लिस्ट पे। ओके, नाउ गाइज वी आर पुशिंग द बार। ठीक है, क्विक 30 सेकेंड्स ब्रेक एवरीवन, 30 सेकेंड्स ब्रेक लेते हैं एंड देन वील कंटिन्यू। I'll try to end the class at 10:30, 10:40 तक, ताकि everyone who has a class from 11 to 1 they get a 20 minutes, 15 minutes break. ठीक है ना, तो चाहिएगा। Any other questions? तो बताइए। Before we start a new topic, please upload this notebook, this one, list वाला या वो string वाला। Indrani, which one are you saying? अरे this one में बता दो ना, ये वाला which you can see on the string So वाला। list one. सर Yes. सर जो आपने दिया था ना, फाइंड द डोमेन नेम, उसमें फर्स्ट आई ट्राइड टू स्प्लिट इट द वे यू शोड, आई डिड इट दैट वे, and second step, instead of using another split, I wanted to find dot and उसके आगे वाला Gmail. So that was the approach I took, but then something went wrong. It's showing syntax error. Share the code, then we'll see. ठीक है भाई, नोटबुक पहले ही अपलोड हो गई है, सो नो इश्यूज गाइस। नोटबुक रिलेटेड कोई डिपेंडेंसी नहीं हो तो अच्छा है। We can use append as same as join. Asim, append in a string. Okay, let me see, does it have append? I am not sure S1 has append. String has append. String object has no attribute append. Why are you saying append? प्रणवी, आपने क्या किया है देखते हैं फटाफट। ओके, सॉरी आई कुड नॉट कॉपी। यस, ये अरे ये देखो ना, रेड हाईलाइट हो रहा है ना, बस उसको ही हटाना है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा कि आपकी गलतियों को हाईलाइट करेगा रेड में। ठीक है, अब देखते हैं कि लॉजिक में क्या फ्लॉ है। email.split@-1, ये आपको क्या दे रहा है? gmail.com दे रहा है, जो कि सही है। gmail.com में आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया है? यहाँ पे gmail.com आने के बाद आप कर रहे हो डॉट फाइंड। ठीक है, ये भी सही लग रहा है मेरे को, ये भी चेक कर लेते हैं। डॉट फाइंड में 5 आ गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, ये जो 5 है ना, ये आप फाइंड कर रहे हो gmail.com के बाद, राइट? ये जो डॉट फाइंड है ये किस पे अप्लाई हो रहा है? gmail.com पे। ठीक है, यहाँ पे आप किसके ऊपर फेच कर रहे हो डेटा? ईमेल पे, राइट। राइट? तो ये जो 5 दे रहा है ना, ये 0 1 2 3 4 5 दे रहा है, जो m दिखा रहा है, तो इसकी गलती नहीं है। ठीक है, आप ये जो डॉट का आप सोच रहे हो ना फाइंड, ये आपको बहुत पहले ही करना होगा फिर, क्योंकि दिस डॉट का लोकेशन कैनॉट बी विथ रिस्पेक्ट टू जीमेल, इट हैज टू बी विथ रिस्पेक्ट टू द एंटायर ईमेल। ओके ओके, आप एक चीज कर सकते हो, यू कैन डू email.find @ and you can do email.find dot, जो आपका अप्रोच है मैं उससे बता रहा हूं। ठीक है, आपको उन दोनों का इंडेक्स मिल गया। अब आप ऐसा करो, यू टेक द ईमेल, आप @+1 से चालू करो, जो आपको जी दे देगा। एंड क्योंकि आपको डॉट के वैल्यू तक जाना है, बट डॉट ऑटोमेटिकली एक्सक्लूसिव हो जाएगा, तो आप डॉट तक चले जाओ, आपको जीमेल मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अनदर अप्रोच। क्लियर है? ओके या ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? So, Pranjal, is there any limit to writing a function like dot split? Because if there is dot No co limit. dot in, so No you might limit. have to separate twice, right?
देखो वो मतलब you should do it for readability purpose, but practically there is no restriction. As long as it keeps returning a string, you can keep doing dot split, dot split, dot split. Does not matter. But after a point of time, it will not make sense. तो वो readability के लिए हम लोग मतलब अलग lines में लिखते हैं. I'll just give you an example also. Suppose when you do print ABC, right? अगर मैं यहाँ पे print लिखता हूँ BCD, right? तो ये invalid syntax है. यहाँ मैं \n डालता हूँ. After line continuation, you see this. ठीक है, तो ये एक वैल्यू है. ये हम लोग जो क्लैरिफाई कर रहे हैं ना, राइट? तो ये वाला यहाँ हम एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रीडेबिलिटी. बट अगर आप देखोगे आपने आई मीन एक फॉर लूप करके चीज होती है, राइट? विल डिस्कस दैट व्हेन वी कम टू इट. सपोज आप ये करते हो, राइट? फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई. फॉर आई इन रेंज 10 टैब ये भी वही कर रहा है. ठीक है, this is also doing the same thing that the above one is doing, but this is more readable and understandable. This is not that understandable. ठीक है, तो मतलब ये जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चरिंग करते हैं ना, ये इसलिए करते हैं. आई थिंक यहाँ पे भी कुछ तो एक \n आने के बाद आ जाता है वैल्यू. लेट्स ट्राई दिस. Two print statements in the same line. Python. तो यहाँ आपको दिखेगा दिस इज यूनिफॉर्म इंडेंटेशन. लाइक स्टैंडर्ड कैसे लिखते हैं, इसको वन लाइनर में ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है, विच यू कैन सी हियर. अच्छा हाँ, मैं भूल गया, माय बैड. ठीक है, तो ये वाला जो चीज है ना, आई फॉरगॉट व्हाट इज कॉल्ड. इट्स कॉल्ड कोलोन, राइट? सेमीकोलन. सेमीकोलन, या Semicolon. सेमीकोलन आप दोगे तो आई कैन राइट लाइक दिस, नो प्रिंट, राइट? बट ये रीडेबल नहीं है. व्हेन आई सेपरेट इट इनटू लाइंस, दिस इज मोर रीडेबल. ठीक है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रीडेबिलिटी. अदरवाइज पोटेंशियली आप कुछ भी कर सकते हो, जितना भी आप चाहो ऐड कर सकते हो. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? यस, नो? ऑल गुड. ओके, अब आ जाते हैं एक डेटा टाइप पे विच इज कॉल्ड लिस्ट. ओके, लिस्ट इज बेसिकली सीक्वेंस टाइप. ओके, सीक्वेंस टाइप मतलब एक्चुअल में उसका टाइप लिस्ट ही होता है, बट इसका एक लार्जर जो हायरार्की है, जो पाइथन का डिफरेंट डेटा टाइप्स है. लेट्स से पाइथन नेम स्पेस, Python data types. Let's see if I get a relevant one that I want to show. Yeah, this one, right? तो जैसे अगर आप देखोगे देयर आर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन. न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जो हम देखे थे. डेटा टाइप्स में सीक्वेंसेस आता है. तो स्ट्रिंग इज आल्सो अ सीक्वेंस, लिस्ट इज आल्सो अ सीक्वेंस, टपल इज आल्सो अ सीक्वेंस. ओके, देन मैपिंग्स पे आएंगे विच इज डिक्शनरी. ओके, एंड देन सेट्स पे आएंगे, दैट विल आल्सो कम. ओके, तो अभी सेकंड सीक्वेंस टाइप मतलब लार्जली सीक्वेंस इज द लार्जर कैटेगरी, सब कैटेगरी इज अ लिस्ट. तो व्हाट इज अ लिस्ट? A list is simply collection or sequence of
elements. ठीक है, a list is a collection or sequence of elements. अब आप बोलोगे कि प्रांजल why are we calling it a collection? Okay, sequence of elements collections, right? तो अब इसमें एक बहुत फंडामेंटल आइडिया ये है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन अ लिस्ट. Okay, very important. There is no restriction in list. What do we mean by that? It can have different sizes. It can have different data types. It can have other data types which are also like itself, and it can have multiple versions of itself. Version बोलना गलत हो जाएगा. It can have multiple values of itself also. अब इसका क्या मतलब है? अगर आपको if you guys remember when we were talking about the C programming languages, you could either create a string array, or you could create an integer array, or you could create a float array, right? So in a single array, you cannot have multiple data types in other programming languages. In Python, if you build a list L1, it can have integers, it can have floats, it can have strings, right? And it can also have another list embedded inside it. Okay, which is why a list is also categorized like a compound data type. Okay, compound data type. अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे integers, right? Floats. ठीक है, let's say strings. What are these? These are simple data structures. Simple data structures क्यों? Because they host only one value. So they are very simple. Compound data types can hold multiple values of different kinds, including other compound data types and itself. Okay? अभी सबको clear हुआ? Yes or no? Integers, Yes. float, strings, simple data structures, they host only one value. Compound data type क्या है? They hold multiple values of different kinds, मतलब different data types, including other compound data types and itself. जैसे एक और compound data type क्या है? Dictionary. Okay, एक और compound data type है dictionary. We'll come to it when we come to it. Right? अब ये list के अंदर मैं ये dictionary भी डाल सकता हूँ. And it is all valid. L1, you guys can see L1 has integers, it has floats, it has strings, it has list, and it has dictionary. Are we all clear, guys? Yes, no? Yes. Yes. Any confusion, any doubt, any further questions? Right? चलिए, अब लिस्ट का जो इंडेक्सिंग होता है, that is the same as string. Okay, there is some question here. Let me see. Riddhi, we'll talk about the dictionary. जैसे ये लिस्ट की नोटबुक है ना, वैसे ये एक पाइथन डिक्शनरीज की भी नोटबुक है. Okay, don't worry, I will show you. ये रहा, डिक्शनरीज का एक पूरा सेपरेट नोटबुक है. We will cover every aspect of a dictionary. Okay, don't worry about it now. I just wanted to explain that it's a compound data type and it can be added in the list. Sir, Yes. sir, list में if instead of mentioning the entire dictionary, if you could have only written D1. Yes, it would have worked. Variable क्या है? Pointer है data का. हाँ, correct. Okay. Okay, it would have worked. ठीक है. Indexing of list is the same as indexing of string. The only difference is a string is a collection of characters and a list is a collection of elements. ठीक है, तो लिस्ट की जो वैल्यूज है ना, इंडिविजुअल वैल्यूज, दे आर एलिमेंट्स. ठीक है,
एंड ये जो आपके एलिमेंट्स है दे आर कॉमा सेपरेटेड. ओके, so Vaibhav is one element of the list, Pranavi is one element of the list. This entire nested list, a list within a list, is called a nested list. तो ये nested list entirely is one element of the list L1. उसके अंदर individually चाहे कितने ही lists हो, कितने ही values हो. Okay, but for this list L1, 5, 10, 15, 20 is a individual part. Clear है सबको guys? Yes, no? Yes. Yes. ठीक है, आते हैं इंडेक्सिंग पे. कंपाउंड डेटा टाइप, ways to organize and manage data values of any data type. There are no constants for compound data types. The actual data values contained in a variable of a compound data type will always be of one or more of the basic data types, right? So basic data types, जो कि simple basic data types, compound data types are these. We are first talking about list. Okay, तो ये example दे दिया. Now, how do you create a And list? they are mutable. Let's check. Okay, L1 is equal to 1, 2, 3. ठीक है, अब अगर आपको इसको चेंज करना है, ठीक है, तो मैं एक मेथड बताता हूं, L1 डॉट अपेंड 4. ये L1 डॉट अपेंड 4, इससे ना 4 ऐड हो जाएगा एट द एंड. विल टॉक अबाउट दिस. तो अब अगर हम यहां पे प्रिंट आईडी ऑफ L1 करते हैं, ओके, एंड हम यहां पे प्रिंट आईडी ऑफ L1 करते हैं, तो यू विल सी 8704. व्हाट हैपेंड? 1 सेकंड. Yes. So I can change a list without altering its memory location. What does that tell you? A list is mutable. Okay, it can be changed after it has been created while maintaining the memory location of the list. Clear hai, everyone? Guys online, yes, no? Yes. आज कोई थम्स अप नहीं दिखा रहा है. It's happening. सर मतलब हाँ बोलिए. सर मतलब अल्टर होगा बट उसका मेमोरी लोकेशन सेम ही रहेगी. Yes. Yes. ओके सर, क्लियर सर. ओके. Okay, so list is mutable. Now you can create list in two ways. One is the implicit creation. In Python, square brackets means a list. Okay, square brackets enclosed means a list. Or you can directly use something called as the constructor of the list data type. Constructor of the list data type, which initializes an empty list like this. So you can either create an empty list like this using the list constructor, or you can use the square bracket. And like always, the golden rule is explicit is best or explicit is better than implicit. Clear, guys? Yes, no? You can either create an empty list like this or you can create like this. Suppose मैंने इसको run किया, L1 क्या है? Empty list. L2 क्या है? Empty list. Type of L1 क्या है? List. Type of L2 क्या है? List. Clear, guys? Yes, no? Yes. Clear है? Okay. Now length function apply हो सकता है list पे. Suppose this is my L1 1, 2, 3 and this is an L2 where there is only a single element 123. तो अगर आप list length of L1 देखेंगे तो ये 3 देगा because there are 3 elements separated by commas. Length of L2 is only 1 because the single element is 123. Clear है everyone? सब लोग Yes. फटाफट एक लिस्ट बनाइए. Create a list of multiple elements and find out its length. Everyone just give it a shot quickly.
ठीक है, अल्तमश shared it 101. यार आपका ये स्ट्रिंग गलत है ना, आपने कोड्स भी डाल दिया, सिंगल और डबल कोड्स दोनों डाल दिया अहमद में. चेक दैट आउट. 1000.50 सही है, m सही है, 12 सही है, प्रिंट लेंथ ऑफ L1, राइट. जस्ट चेक दैट वंस. ठीक है गाइस, सबके लिए काम कर रहा है? यस नो? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? हैंड्स ऑन करने में कोई दिक्कत? No. No. Sir, बताइए. sir, how do can I replace this second element in a list? Replace function. अभी से क्यों सोच रहे हो? अभी चालू तो होने दो. अच्छा ठीक है, अभी ठीक है, भी okay. is fine. सब हो सकता है. Pranjal, one question. Like when we are finding the length of a list, it is choosing in particular element, like 1, 2, 3, A, B, C, Weber. So it will give you 3 if you have these 3 elements, right? So if I want the length of a particular element within a list, is that a पहले उसको physical use एक्सेस case? करना पड़ेगा. Is it a use case which is used generally in like data extraction, like in data cleaning? Is होता it तो used like है, that? होता तो है. I'll give you an explanation. Suppose, yes, suppose you want to analyze the chat sizes. Okay, chat size. Suppose you write text, right, on your mobile phone, WhatsApp and all that, and someone else also writes a text, Facebook page, Instagram page, jahan pe bhi, right? In that situation, are you a talker or are you a, are you an introvert or an extrovert? So just let's say I want to do that kind of analysis. Very random, vague example दे रहा हूँ मैं, but ऐसा होता है. We've done it in NLP. ठीक है. मान लो extroverts लोग क्या करेंगे? They'll share a lot, they'll write a lot of text, they'll express themselves a lot. ठीक है. Introverts don't usually express that way, right? तो वो कम लिखेंगे, थोड़ा कम बोलेंगे, right? तो अब मान लो कि यहाँ पे text लिखा है, hey, what's up? What are you doing today? This, let's say this is text from an extrovert, right? Text from an introvert will be something like this, right? So what I can do is I can find the sizes of this text, size of this text, and then let's say I want to do a hypothesis test. सबको यहाँ पे पता है what is a hypothesis test? Do you guys know what a hypothesis test is? Null hypothesis, Yes. alternative hypothesis, type 1, type 2. No, No. sir. ठीक है. सपोज मेरे को एक क्वेश्चन आंसर करना है, मतलब मेरा एक assumption है, the average text size of an extrovert is greater than the average text size of an introvert. सपोज मेरा ये एक क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली इसका कोई डिफाइंड आंसर नहीं है, यस और नो. बिकॉज सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि एक्सट्रोवर्ट ज्यादा बोलते हैं तो उनका टेक्स्ट साइज ज्यादा होगा, देन समवन विल टेल यू कि टेक्स्ट में इंट्रोवर्ट ज्यादा बात करते हैं बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ फिजिकल confrontation, right? They are not very comfortable talking to people physically, but in text they are very active. ठीक है, तो ये भी एक assumption हो सकता है. तो what it tells you is that you cannot come to a conclusion directly. ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? You will have to do a hypothesis test where the results of the test can be two things. Either your assumption is correct or your assumption is false. दो ही चीजें हो सकती है. So what I will do is I will calculate the average text sizes of all the extroverts. I will calculate the average text sizes of all the introverts. And then I will do an analysis of the average number of characters for both of them. And if that average number of characters has a significant difference, then I am going to, conclude if actually my assumption is true or not. ठीक है, तो इस केस में आपको लेंथ निकालना पड़ेगा वैभव. ओके, इस चीज के बारे में बाद में बात करेंगे, मैं अभी दिखा देता हूँ. इट्स कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. लेंथ आई फॉर आई इन L2. ठीक है, तो इससे आपको दोनों स्ट्रिंग्स का लिस्ट लेंथ मिल जाएगा, राइट? आप इसको लूप भी कर सकते हो. ठीक है, यू कैन डू len L2 something like this for I in L2, length of L2 dot append length of I. तो ये भी चलेगा, राइट? यूज केसेस है, बट आई मीन ऐसा कोई बहुत ही पॉपुलर नहीं है, बट आ ही सकता है एंड सिंपल भी है. तो आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन. वैभव, यस नो? Yeah, thank you. ठीक है, cool. Compound data type, we've already discussed these things. इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट तो आई होप बैकवर्ड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग सेम है.
स्ट्रिंग्स के अंदर कैरेक्टर्स होते थे, लिस्ट के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स है. ओके, backward indexing, forward indexing, we've already discussed. Yes. How do we access elements of a list? Suppose ये आपका L1 है. How do you access element of a list? L1 square bracket के अंदर index number. Simple. First access the list L1 and then write the index that you want to access. So first index किसका है? 2 का है. So you are getting the value 2. Is that clear, everyone? Yes, no? सिंपल एकदम, जिस तरीके से आप स्ट्रिंग में कर रहे थे, राइट? यू आर डूइंग S1 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में आप एक्सेस कर रहे थे. सिमिलरली L1 एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में आप एक्सेस करोगे. इज दैट क्लियर? राइट, स्लाइसिंग ऑल्सो वर्क्स. एनी क्वेश्चन सो फार गाइस? राइट, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, एक क्विक टास्क कर लेते हैं. ओके, हैंड्स ऑन. This is a list that I am giving you. Okay, find the last 3 elements, find the central element, find the length of the list and use it to get the 4th last element. तीनों चीज का डिस्कशन हो गया है. Try to solve it. Okay, बहुत सिंपल है. Find the last 3 elements, find the central element, assume odd numbered list, hint एक दिया हो कि length function use करना पड़ेगा. Find the length of the list and use it to get the 4th last element. Okay, the list has been shared with you guys on the chat. तो ये वाला टास्क करते हैं. 5 to 10 minutes. ठीक है, there is no rush. मतलब if you need more time, always ask for more time. ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है. But ठीक है, I mean try to be on your feet. ठीक है, try whatever you want to in the next 5 to 10 minutes. Then we'll discuss the solution.
Okay, guys. Quickly discussing the solution. ठीक है. This is our L1. Okay. This is our L1. What is the last three elements? -3 to the end. Is this correct? Yes or no? Everyone clear? प्रांजल -1 से लेकर के -3 रेंज नहीं डाल सकते हम? -1. Start index should be smaller than end index, no? Start index छोटा होगा ना end index से. अगर आप -1 से -3 डालोगे तो -1 बड़ा है ना -3 से. आप बड़े से छोटा नहीं जा सकते. फाइंड द सेंट्रल एलिमेंट. कैसे? लेंथ ऑफ L1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2.5 आएगा. डबल फॉरवर्ड स्लैश 2 करेंगे तो 2 आएगा. सो 0 1 2 ये है सेकंड. यहाँ पे डाल देंगे L1. क्लियर? यस नो? Yes. Find the length of the list and use it to get the fourth last element. ये हमने कल ही किया था. फोर्थ लास्ट एलिमेंट -4 से आएगा. अब यहाँ पे अगर मैं लेंथ ऑफ L1 डाल दूं, राइट? अब हमें चाहिए फोर्थ लास्ट एलिमेंट, राइट? फोर्थ लास्ट एलिमेंट क्या होगा? -1 -2 -3 -4. सो वी वांट 456, राइट? लेंथ ऑफ L1 कितना होगा? 5. 5 - 4 1. तो ऑटोमेटिकली यूजिंग द लेंथ ऑफ L1, राइट, we get the fourth last element. Clear है सबको? Yes, no? Any questions? लास्ट वन एक बार फिर से बताइए. फोर्थ लास्ट Yeah. चाहिए हमें. फोर्थ लास्ट एलिमेंट चाहिए. तो व्हाट डिड आई टेल यू? अगर आपको फोर्थ लास्ट चाहिए तो या तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो. Sir, That but is going to work. fourth last is 455, right? Fourth last element. Oh, okay, sorry, my bad. Fourth last element. Yes. अगर हम -3 करेंगे तो आ जाएगा ना नहीं मतलब -3 करेंगे तो कैसे आएगा? सर. L1 -3 ब्रैकेट में. नहीं, वैसे नहीं. L1 -2 से आएगा, राइट? फोर्थ लास्ट एलिमेंट. एक सेकेंड यार. फोर्थ लास्ट एलिमेंट तो 456 होगा. प्रणवी आप क्या बोल रहे हो? ये तो सेकंड लास्ट एलिमेंट है. मैं भी आपको बात मान. So मतलब मैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग से देख रही हूँ. 123 is in the like if you say is first, एक सेकेंड. 456 is second. लास्ट एलिमेंट ये है. हाँ, तो फोर्थ लास्ट क्या हुआ? सेकंड लास्ट होगा ना ये. अच्छा, ऐसा है. अरे मतलब आई एम आल्सो कंफ्यूज गाइस. मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि व्हाट प्रणवी इज सेइंग इज करेक्ट बिकॉज़ दैट सर हम Pranjal, you're correct. You're correct. ओके. So it was a reverse question, so it was a little confusing. Like we wanted the fourth sir. element or the fourth last. Okay, so हम अगर consider 455 होता तो लास्ट हम यूज ही नहीं करते. वो 55 होने से सेकंड लास्ट होता. हाँ, मतलब हाँ, तो या तो फोर्थ एलिमेंट करते या फिर सेकंड लास्ट एलिमेंट करते. वो लास्ट एलिमेंट यूज नहीं करते. लास्ट से फोर्थ है तो इसीलिए 456 है. मैं भी लास्ट थोड़ा से फोर्थ है. yeah. Thank you guys, thank you. My bad, sorry. Cool. Everyone, discussion हो गया. Next day we'll start with modification, updation and the rest of the part of the list. List complete करने के बाद we'll start with dictionaries, then we'll go to tuples and sets. ठीक है? तो hopefully next week तक हमारा basic data types और वो सब कुछ clear हो जाएगा. उसके बाद हम लोग if else condition पे काम करेंगे, then हम लोग for loops पे काम करेंगे, then हम लोग data science के concepts पे आ जाएंगे. Data analysis with pandas पे. ठीक है? लिस्ट वाली नोटबुक ऑलरेडी आपके क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे है. वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगी. एंड सर, आपने कल स्ट्रिंग्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर और स्ट्रिंग के बीच में जो समझाया था, समथिंग लाइक बाइनरी और वो सब, आई थिंक वो नोटबुक मिसिंग है सर. मतलब आप बोल रहे हो कि मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड किया होगा नोटबुक में एंड देन मैं अपडेट नहीं किया नोटबुक, राइट? Maybe I'm not aware, but I think something is I just missing. update the notebooks that I earlier uploaded with the current ones. ठीक है? Yeah. तो उससे Thanks. हो जाना चाहिए. I hope I can edit right. Okay. And sir, Anyone we could, else? will we get assignments regarding this? Yes, you will. This week you will.
Are you there, Rakib or Sabyasachi? Anyone from Ivy? आ गया Python session 1. सर आज का भी जो वो सारा सब डोंट वरी. मैं इसलिए अपलोड मैं जब स्टार्टिंग में लिस्ट का वो मांगा गया था ना, तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मतलब लास्ट में करूंगा तो बेटर होगा. बट ठीक है, अभी कर दे रहे हैं. सेशन 2 सेशन 2 सेशन 2. When closing Jupyter notebook should be shut down or log out? Doesn't matter, you have to just know that there are kernels. देखो मैंने बहुत सारे नोटबुक्स पे काम किया है, ठीक है, सारे कर्नल्स खुले हो. अगर आपने कर्नल बंद कर दिया तो आपका मतलब सारा डेटा लॉस हो जाएगा, मतलब जो भी आपका अपडेटेड था, तो आपको सेल्स वापस रन करने पड़ेंगे. अगर आपने कर्नल बंद नहीं किया है तो आप जुपिटर बंद कर दो, वापस खोल के वो चल जाएगा सेम. No, Indrani, that's not a problem. That's my job anyway. We can sort the list and then the middle value. Sort the list and then the middle value. Why? Why will you do that? I mean, that's not the question, right? So why are you trying to do that? Central element of existing list मांगा. अगर मैं बोलता central element of sorted list, तो आप वही करते, sort करके फिर middle value. Okay. Sorting का पर्पस तब आता है जब आपको मीडियन निकालना हो, क्योंकि मीडियन इज 50% ऑफ द डेटा. तो देन यू सॉर्ट एंड फाइंड आउट द मिडिल एलिमेंट. ठीक है. Great guys, I'll see you all next week, Saturday. Have a good day. Enjoy your Sunday. thank Thanks, you. and let me know if you need anything from my side on WhatsApp group. Okay. Thanks. Bye guys. Thank Okay, you. sir. Bye guys. Bye. Bye sir. And do fill the feedback. Bye, Pranjal. Feedback के basis पे decision हुआ. I mean, this week is the decision mode. So do fill the feedback whenever you get it. Okay. Okay sir. Bye. Thanks.